Assalamu alaikum everyone. My name is Iram Munir. I'm head of Computer Information Technology Department at Govt.College of Technology, Lytton or Lahore, and also a lecturer as well as my responsibility. I'm also doing PhD in computer science. Today I am going to share my review of an interesting and thought-provoking TED Talk by Dan Pink, titled "The Puzzle of Motivation." This TED Talk was presented by Dan Pink, a well-known author and career analyst who has written extensively about work, business, creativity, and human motivation. This talk was presented at TED Global in 2009, and it explores a very important question: what really motivates people to perform better? Before watching this talk, many of us might think that the answer is simple. If we want people to work harder, we should give them more money, mm, reward, bonuses, or promotions. But Dan Pink challenges this traditional idea, and that is what makes this talk so interesting. At the beginning of this talk, Dan Pink makes a personal confession and then connect it with the broader subject of motivation. He explains that traditional management systems are often based on idea of a carrot and stick motivation. The carrot represents rewards and incentives, while the stick represents punishment or pressure. This approach assumes that if we reward people for doing something, they will perform better, and if we punish them, they will avoid undesirable behavior. However, Pink argues that this approach does not always work, especially when people are performing tasks that require creativity, problem solving, critical thinking, and innovation. One of the most interesting example in the talk is the famous candle problem. Participants are given a candle, a box of thumbtacks, and some matches. They are asked to attach this candle to a wall so that the wax does not drip onto the table. The interesting part is that people initially have difficulty solving the problem because they see the box simply as a container for the thumbtacks. The solution is to think differently and use the box itself as a candle holder. This example demonstrates the importance of creative thinking and overcoming functional fixedness. Dan Pink uses this experiment to explain that when people are given certain external incentives for solving a problem, their performance can sometimes become worse rather than better. Dan Pink then discusses extrinsic motivation. Extrinsic motivation means doing something because of an external reward or consequences. For example, a student may study for only for the good marks. An employee may work only because they want a bonus. A salesman may try to sell more products because they want a commission. These reward can certainly be useful in some situation, particularly for simple and routine tasks. However, Dan Pink argues that they can become problematic when the task requires creativity and high level thinking. This is one of the strongest message of the talk. More reward don't always mean better performance. Pink explains that there is a mismatch between what scientific research tells us about uh, motivation and what many organizations actually do.
Many organizations continue to rely heavily on financial incentives, bonuses, targets, and punishments. But for modern work, particularly work involving creativity and complex problem solving, people need something more than money. They need to feel that their work has meaning. They need to feel trusted. They need opportunities to learn and grow. And they need some control over how they perform their work. This brings us to most important part of Dan Pink's talk, intrinsic motivation. Intrinsic motivation means doing something because we find it interesting, meaningful, enjoyable, or personally valuable. For example, a teacher may teach not only because of salary, but because they genuinely want to help students learn. A student may learn programming because they enjoy certainly uh, something new, and a researcher may spend hours solving a difficult problem because they are curious and want to discover something valuable. According to Dan Pink, intrinsic motivation is especially important for modern, creative, and knowledge based work. Dan Pink presents three major elements of intrinsic motivation. Autonomy. The first element is autonomy. Autonomy means having some freedom and control over our work and our lives. People want to have a voice in deciding what they do, how they do it, when they do it, and where they do it. When people are trusted and given appropriate freedom, they can become more engaged and creative. For example, in education, students can sometimes be given choices about their projects, topics, or method of learning. Similarly, teachers and employees can perform better when they are trusted to use their professional judgment. And the second element is mastery. Mastery means the desire to become better at something that matters. People naturally want to learn, improve their skills, overcome challenges, and achieve a higher level of competence. For example, a student who learns programming does not become successful after writing one program. They need continuous practice. They can make mistakes, learn from them, and improve their coding skills and gradually become better. This continuous process of improvement is mastery. And the third element, very important element, is purpose. Purpose means having a reason bigger than simple earning money. People want to feel that their work contributes to something meaningful. For example, a teacher purpose may be to educate and empower students. A doctor may want to improve people health. Researcher may want to solve an important problem. And when people understand why their work matters, they can become much more motivated. Dan Pink describes autonomy and mastery and purpose as the building block of new approach to motivation. Dan Pink does not present this idea only a theory. He gives several examples from the business and technology. One example is Atlassian, a software company that allowed engineers to spend time working on project of their own choice.
The idea was to give employees freedom to explore, experiment, and create. He also discussed the result only work environment, R ROWE, where employees are given greater flexibility and evaluated more on results than a rigid schedule. These examples support Pink's argument that giving people autonomy and increase engagement in satisfactions. Perhaps the most memorable example in the talk is the comparison between Microsoft and Encarta. Microsoft Encarta and Wikipedia. Encarta followed a traditional commercial model. Professionals were paid to create and edit encyclopedia contents. Wikipedia followed a very difficult and different model. Thousands of people contributes voluntarily without being paid for every article they created. According to Pink, Wikipedia demonstrated the extraordinary power of intrinsic motivation and purpose. People contribute because they want to share knowledge, learn, participate, and contribute to something larger and themselves. This example strongly challenges the assumption that money is always the most powerful motivator. As an educator, in my opinion, damping TED Talk is highly relevant to today's educational and professional environment. As educator, we often think about how to motivate students. Sometimes we focus too much on marks, grades, certificate, prizes, or punishment. Of course, these things have their place, but students also need curiosity, confidence, independence, and sense of purpose. A student who studies only for marks may stop learning when the examination is over, but a student who develops a genuine interest in learning may continue learning throughout the life. The same principle applies to employees and professionals. If people feel that they are simply completing tasks for a salary, their motivation may remain limited. But when they feel trusted, capable, and connected to meaningful purpose, their engagement can become much stronger. So, the main takeaway from this is for me is that we should move from asking how can I make people work harder to asking uh, how can I create an environment where people want to do their best work. This is very important change in mindset. So, for teachers, it means creating classrooms where students have opportunities to explore, create, ask questions, and take responsibilities for their learnings. Uh, to conclude, Dan Pink's The Puzzle of Motivation is an insightful TED talk and challenges the traditional belief that rewards and punishment are always the best way to motivate people. His central message is that for complex, creative, and meaningful work, intrinsic motivation can be extremely powerful. So, three key elements: an autonomy, mastery, purpose is the best element. I personally found this talk very valuable because it is not only relevant to business and organization, it is also highly relevant to teachers, students, professionals, and anyone who wants to improve themselves. So, I hope this discussion gives you a very um, new perspective on motivation and encourage you to uh, think about what truly motivates you and the people around you. Keep learning,
keep growing and keep motivating yourself and other. Allah Hafiz. जी तो व्यूअर्स, अब मैं अपना ये जो जायज़ा है इसको उर्दू में पेश करना चाहूँगी। अ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरम मुनीर है और मैं शोबा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सरबराह हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, लिटन और लाहौर में, और इसके साथ-साथ मैं पीएचडी मुहक्किक भी हूँ। अच्छा, आज मैं आपके सामने एक नहायत ही दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू का जायज़ा पेश करने जा रही हूँ। ये गुफ्तगू मारूफ़ मुसन्निफ़ और इंसानी रवैयों के माहिरीन डैन पिंक ने पेश किया। इस गुफ्तगू का उन्वान है द पज़ल ऑफ मोटिवेशन, यानी तहरीकी अमल का मुअम्मा। ये गुफ्तगू 2009 में मुनक्कद होने वाले एक मरूफ अ टेड टॉक सेंटर में पेश की गई। डैन पिंक अपनी गुफ्तगू में एक बहुत ही अहम सवाल उठाते हैं। उनका सवाल ये है कि आखिर इंसान को बेहतर काम करने के लिए हकीकी तौर पर क्या चीज़ मुतहर्रिक करती है, मोटिवेट करती है? उनका कहना है कि मतलब क्या ज़्यादा पैसा या इनाम या कोई सज़ा, या फिर इंसान के अंदर मौजूद कोई ऐसी क़ुव्वत है जो इसे अपने काम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर आमादा करती है। तो मेरे ख़्याल में यही सवाल इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। अच्छा, डैन पिंक गुफ्तगू के आगाज़ में इंसानी मोटिवेशन यानी मुहर्रकात के बारे में हमारे रिवायती तसव्वुर को चैलेंज करते हैं, और मतलब आम तौर पर हम ये समझते हैं कि अगर किसी शख्स को ज़्यादा इनाम दिया जाए तो वो ज़्यादा मेहनत से काम करेगा, और अगर इसको सज़ा का खौफ हो तो बेहतर कारकर्दगी दिखाने की भी कोशिश करेगा। इस तस्वुर को आम तौर पर ना इनाम और सज़ा का तरीका कहा जाता है। यानी अच्छा काम करो तो इनाम मिलेगा, और अगर गलत काम करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। डैन पिंक कहते हैं कि ये तरीका, मतलब ये बहुत सारे अदारों और कारोबारी तंज़ीमों में ये तरीका चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हर जगह ये जो तरीका है ये मौसर नहीं है। ख़ास तौर पर ऐसे कामों में जिनमें तख्लीकी सोच, मसला हल करने की सलाहियत या तहकीक है, जिद्दत है, गहरी सोच की ज़रूरत हो, वहाँ सिर्फ़ इनाम और सज़ा से काम नहीं चलता। मतलब इससे नताइज बहुत अच्छे नहीं आ सकते। अपनी गुफ्तगू में डैन पिंक एक दिलचस्प मिसाल पेश करते हैं जिसे हम मोमबत्ती का मसला यानी कैंडल प्रॉब्लम भी कहते हैं। अ, इसमें लोगों को एक मोमबत्ती, कुछ कीलें और माचिस दी गई, और कहा गया कि मोमबत्ती को दीवार पर इस तरह से लगाएँ कि इसकी जो मोम है वो मेज़ पर ना गिरे। ज़ाहिर तो ये एक आसान मसला है, लेकिन बहुत से लोग फ़ौरन इस मसले का हल तलाश नहीं कर पाए। इसकी वजह ये है कि वो कीलों के डिब्बे को सॉरी कीलों के डिब्बे को सिर्फ़ वो कील रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ समझ रहे थे। असल हल ये है कि डिब्बे को भी मोमबत्ती रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि इसको किया जाए, असल हल इसका ये था। इस मिसाल से ये बात सामने आती है कि मसला हल करने के लिए सिर्फ़ ज़हानत काफ़ी नहीं होती, बल्कि चीज़ों को नए अंदाज़ से देखने की सलाहियत भी ज़रूरी होती है। डैन पिंक इस मिसाल के ज़रिए ये समझाते हैं कि बाज़ औक़ात बैरूनी इनाम इंसान की तख्लीकी सलाहियत को बेहतर करने के लिए की बजाय उसको महदूद भी कर देते हैं और वर्स भी कर देते हैं। इसके बाद डैन पिंक बैरूनी मुहर्रिक के बारे में बात करते हैं कि बैरूनी मुहर्रिक से मुराद ये है कि इंसान किसी काम को किसी बैरूनी फ़ायदे के लिए सरअंजाम दे। मतलब एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ़ इसलिए पढ़ाई करे कि उसको अच्छे नंबर चाहिए। एक मुलाज़िम है, वो सिर्फ़ इसलिए अपना काम जो है अच्छा करे कि उसको इज़ाफ़ी रकम चाहिए, मतलब जिसको हम कमीशन वग़ैरह कह सकते हैं। एक दुकानदार ज़्यादा फ़रोख्त सिर्फ़ ज़्यादा मुनाफ़े के लिए करना चाहता है। ये तरीका बहुत सादा और मामूली कामों में तो मौसर हो सकता है, लेकिन जब काम पेचीदा,
तख्लीकी या इसमें नई सोच की ज़रूरत हो, तो सिर्फ़ बैरूनी इनाम पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। यहाँ डैम्पिंग हमें एक अहम सबक देते हैं कि ज़्यादा इनाम हमेशा बेहतर कारकर्दगी की ज़मानत नहीं होता। अ, उनकी इस गुफ्तगू में सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं कि डैम्पिंग अंदरूनी मुहर्रिक की अहमियत बयान करते हैं। मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदरूनी मुहर्रिक का मतलब है कि इंसान किसी काम को सिर्फ़ बैरूनी फ़ायदे के लिए ना करे, बल्कि इसलिए करे कि वो काम में दिलचस्पी रखता है या इसका बामकसद काम है या वो इसको महसूस करना चाहता है। मसलन एक उस्ताद सिर्फ़ तनख़्वाह के लिए नहीं पढ़ाता, बल्कि इसलिए भी पढ़ाता है कि वो अपने तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहता है। एक रिसर्चर इसलिए तहकीक नहीं करता, उस पे घंटों नहीं लगाता कि वो मतलब बस टाइम वेस्ट कर रहा हो, बल्कि वो कुछ नया दरियाफ़्त करना चाहता है। और इसी तरह एक तालिब-इल्म जो है वो एक मज़मून को सिर्फ़ पास ही नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी मालूमात और सलाहियत बढ़ाने के लिए भी सीखता है। ये सारे अंदरूनी मुतहर्रिक हैं। डैन पिन के मुताबिक अंदरूनी मुहर्रिक के 3 बुनियादी इसके अनासर हैं। पहला अंसर खुद इख्तियारी है, यानी ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि इंसान को अपने काम के बारे में कुछ आज़ादी हासिल हो, इंसान ये महसूस करना चाहता है कि वो अपने फैसलों में कुछ अख्तियार रखता है। और इसका जो दूसरा आंसर है वो महारत में बेहतरी जिसको हम मास्टरी कहते हैं। दूसरा आंसर इंसान फ़ितरी तौर पर चाहता है कि वो किसी काम में बेहतर से बेहतर हो। एक तालिब-इल्म चाहता है कि वो अपने मज़मून में महारत हासिल करे। एक उस्ताद चाहता है कि वो बेहतर बेहतर तरीके से पढ़ाए। एक रिसर्चर मुहक़्क़िक़ चाहता है कि इसकी तहकीक जो है वो पहले से ज़्यादा मज़बूत हो। ये मुसलसल बेहतरी का सफ़र इंसान को आगे बढ़ने के लिए मुतहर्रिक करता है। और तीसरा आंसर जो बहुत अहम है, वो मतलब सबसे अहम है, वो मकसद है। इंसान सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं चाहता, वो ये भी जानना चाहता है कि इस काम की कोई अहमियत है। वो महसूस करना चाहता है कि इस मेहनत का कोई बड़ा मकसद है। और मसलन एक उस्ताद का मकसद सिर्फ़ सबक को मुकम्मल करना नहीं बल्कि अपने तलबा को बेहतर इंसान और कामयाब पेशावर बनाना भी हो सकता है। एक डॉक्टर का मकसद सिर्फ़ अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारी पूरी करना ही नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना भी हो सकता है। अ, डैन पिंक अपनी गुफ्तगू में एक बहुत दिलचस्प मिसाल भी पेश करते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा और विकिपीडिया के दरमियान फ़र्क बयान करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा में लोग जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, यानी उनको कोई उसमें मुआवज़ा वगैरह दिया जाता है। जबकि जो विकिपीडिया है वहाँ लोग अपने शौक से वहाँ पे मवाद जो है वो अपलोड करते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने इल्म को बाँटना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं। और वो महसूस करते हैं कि वो एक बड़े मकसद में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये मिसाल हमें दिखाती है कि इंसान को हमेशा सिर्फ़ माली फ़ायदा ही मोटिवेट नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात इल्म, उसका मकसद, आज़ादी और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होने का एहसास इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर मोटिवेशन बन सकता है। मेरे ख़्याल में डैन बिंग की ये गुफ्तगू तलीमी मैदान के लिए ख़ास तौर पर अहम है। हम अक्सर तलबा को नंबरों, इनामात और इम्तहानात के ज़रिए मुतहर्रिक करने की कोशिश करते हैं। यकीनन अच्छे नंबर और इनामात की अपनी एक अहमियत है, लेकिन अगर तालिब-इल्म सिर्फ़ नंबरों के लिए पढ़ता है, तो मुमकिन है कि इम्तिहान ख़त्म होते ही इसकी सीखने की ख़्वाहिश भी ख़त्म हो जाए। इसके बरक्स वो तालिब-इल्म जो कि सीखने का शौक रखता हो, वो ज़िंदगी भर इल्म हासिल करता रहेगा। लिहाज़ा एक अच्छा उस्ताद सिर्फ़ ये नहीं देखता कि तालिब-इल्म कितने नंबर हासिल किए हैं, वो ये भी देखता है कि तालिब-इल्म सवाल पूछता है कि क्या वो मसला हल करने की कोशिश करता है? क्या वो नई चीज़ें सीखने की जो दिलचस्पी रखता है?
اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے؟ کیا وہ اپنے علم کو حقیقی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اندرونی محرک بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس گفتگو سے میں نے کئی اہم باتیں سیکھی ہیں، جیسے وہ کہ پیسہ ہی ہر چیز کے لیے اہم نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کو کچھ کام کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ انسان بہتر بننا چاہتا ہے اور اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کام کا کوئی مقصد ہو۔ سو میرے خیال میں اس پوری گفتگو میں سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو زیادہ کام کرنے پر کیسے مجبور کریں، بلکہ ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم ایسا ماحول کیسے پیدا کریں جہاں لوگ خود اپنا بہترین کام کر سکیں۔ ایک نہایت فکر انگیز اور قابل غور گفتگو تحریکی عمل کا معمہ۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈین پنک نے یہ گفتگو ہمیں اپنے روایتی خیالات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کی، کہ وہ مطلب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو پہ غور و فکر کریں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ انسان کو زیادہ انعام دو اور زیادہ محنت کرے گا، لیکن ڈین بنگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پیچیدہ اور تخلیقی کاموں کے لیے انسان کے اندر موجود موٹیویشن ہی اہم ہوتی ہے۔ خود اختیاری مہارت میں بہتری اور مقصد ایسے عناصر ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط تحریک فراہم کرتے ہیں، یعنی موٹیویشن دیتے ہیں۔ میرے لیے اس گفتگو کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ حقیقی کامیابی صرف اس بات میں نہیں ہے کہ دوسروں کو کیسے متحرک کریں، موٹیویٹ کریں، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم اپنے اندر سے کیسے موٹیویشن پیدا کریں اور دوسروں کے اندر بھی وہ جذبہ کیسے بیدار کریں۔ اگر ہم اپنے طلباء، اپنے اساتذہ اور اپنے ارد-گرد کے لوگوں کو آزادی، سیکھنے کے مواقع اور ایک بامقصد سمت فراہم کریں، تو ہم صرف بہتر کارکردگی ہی نہیں بلکہ زیادہ تخلیقی، ذمہ دار اور پراعتماد انسان بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا یہ جائزہ سنا۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو تحریکی عمل کے بارے میں ایک نئی سوچ دے گی۔ اپنے آپ سے ضرور سوال پوچھیں، مجھے واقعی کسی چیز سے آگے بڑھنے کی تحریک ملتی ہے، اور میں اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے ایسی کون سی تبدیلی لا سکتی ہوں جو انہیں بہترین کام کرنے کے لیے اپنے اندر سے متحرک کرے۔ اپنی مثبت سوچ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔